Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today, we are going to focus on answer writing strategies for Ted Hughes poems, particularly Hawk Roosting and Crossfall. So, we will learn how to identify key lines and their context. We will learn critically examine poetic devices like metaphors, symbolism, and imagery. We will compare and contrast themes, especially the portrayal of power, structure answers for long questions and 20-mark questions effectively. These strategies will help you to write clear and well structured answers and insightful answers for your exams. So, before we dive in, don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more updates. Your support helped me to bring more detailed lectures, exam tips, and literature insights right to your screen. So get your notebook and pen ready. We are going to make Ted Hughes easy to understand and easy to write about. Right? So the first question is identify, contextualize, and critically examine the following lines. So this is the reference to context. सबसे पहले we need to identify these lines. He got his strength of flush in full glitter. He clawed, this is the indication, flubbed his rage up, his aimed his beak direct at sun's center. He laughed himself at, to the center of himself and attacked. His battle cries, trees grew suddenly old, shadows flitted. So these lines are from Ted Hughes' poem Crossfall. तो एक नंबर आपको यही मिल जाएगा जब आप इसको आइडेंटिफाई करके लिख देंगे कि ये जो लाइंस है ये क्रॉस फॉल पोएम से एक्सट्रैक्ट की गई है. सो द कॉन्टेक्स्ट इज क्रो फिल्ड विथ प्राइड एंड एम्बिशन. सो फर्स्ट स्टेप जो है इस आंसर का वो है आइडेंटिफिकेशन. सो आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि ये जो लाइंस है टेड ह्यूज की पोएम क्रॉस फॉल से है. कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि द क्रो filled with pride and ambition decides to confront the sun. He prepares himself physically and mentally, fully aware of the risk. These lines describe Crow's aggressive and audacious preparation and attack on a force much greater than himself, right? सेकेंड स्टेप होगा आपका, आप इस आंसर को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे बेसिकली. So he got his strength up flesh and full glitter. So this line shows Crow's confidence and pride. Flush and glitter, these two terms indicate vitality, energy, flamboyance, almost like a warrior preparing for a battle, right? Symbolically of human ambition and ego, he clawed and fluffed his rage up. So this physical action shows externalization of inner anger and determination. Hughes conveys emotion becoming tangible and active, reflecting the intensity of Crow's ambition. He aimed he aimed his beak direct at the sun center. So this here we can see that ambition is focused and fearless. Sun symbolizes absolute power, truth, or divine authority. Cross direct attack highlights hubris, pride that challenges higher forces. He laughed himself to the center of himself. So the laughter shows the self-absorption, delight in own power, and egotism. Center of himself here. So it indicates internal focus, egocentric worldview, and attacked at his battle cry trees grew suddenly old, shadows flattened. So this is a hyperbolic imagery which shows the magnitude of Crow's perceived power. Trees and shadows reacting to Crow's cry indicate how pride and hubris can distort perception and affect surrounding. Right? इसके अलावा कुछ जो चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है यू नीड टू बिगिन
your answer, you need to begin the answer by identifying the poem and the context. Explain each line literally and symbolically. तो ये lines को आपको literally भी explain करना है, लेकिन साथ ही साथ symbolically भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसको explain करना है. You need to highlight Hughes poetic devices. अगर आप पोएटिक डिवाइसेस को भी अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ये आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका. इस क्योंकि जैसे कि इस इन लाइंस में इमेजरी है, सिंबॉलिज्म है, हाइपरबोली है, पर्सोनिफिकेशन है, एंड यू कैन कंक्लूड योर आंसर विद मॉरल लेसन, राइट? लाइक एम्बिशन एंड प्राइड कैन लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. सो ये क्वेश्चन जब आया था तो ये 10 मार्क्स के लिए आया था, और 10 मार्क्स के लिए इतना करना काफ़ी सफिशिएंट है. तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. कमेंट ऑन टेड ह्यूज टेड ह्यूज यूज ऑफ मेटाफर्स, सिंबॉलिज्म, इमेजरी इन द पोएम्स हॉक रोस्टिंग एंड क्रॉसफॉल. सो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है. बाय टू बिगिन दिस आंसर you need to write an introduction like Ted Hughes, a poet deeply influenced by nature, mythology, and human psychology, often uses animals to reflect human traits, instincts, and moral truths. Now मतलब जब आप टेड ह्यूज का इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद आपको अब इन दो पोएम्स का भी इंट्रोडक्शन लिखना होगा कंबाइन करके. लाइक इन हॉक रूस्टिंग एंड क्रॉसफॉल, Ted Hughes employs metaphors, symbolism, and imagery to explore themes of power, pride, ambition, and hubris. Both poems use birds as a central figures to comment on human nature and the natural order, but the approach and tone differs. The hawk uh, symbolizes divinity and controlled power, and the crow it symbolizes rebellious, ambitious yet flawed power. Secondly, you need to write about you need to analyze the metaphors, right? So in hawk roosting, hawk is a metaphor for power, dominance, authority. This is a first person narration, makes the bird a direct voice of control, almost divine in certainty. Hawk metaphorically represents absolute control over life and death. So metaphors like hooked head and hooked feet, it conveys instinct, strength, and predatory supremacy. In Crow's Fall, crow is a metaphor for pride, ambition, and human hubris. Actions like aiming at the sun metaphorically represent defiance against higher powers or moral order. So, cross, laughter, fall, and blackening are metaphors for self delusion and consequences of ego. So, the key ideas here, which is Hughes uses animal metaphors not only to depict behavior but also to reflect human psychological and moral realities, right? Third point, which is very important, analysis of symbolism. सो एनालिसिस ऑफ सिम्बलिज्म, हमने यहाँ मेटाफर का एनालाइज किया, अब करेंगे सिम्बलिज्म को एनालाइज. सो इन हॉक रोस्टिंग, hawk symbolizes nature, power, and authority. It's a divine like control and order in nature. The act of roosting is about patience, dominance, and quiet power. So, symbolism in this poem is positive in tone, showing strength and confidence. But in this poem, Crow's Fall, crow symbolizes ambition, pride, and human arrogance, the struggle against forces greater than oneself. So the sun, there is one more thing to describe, that is sun. The sun symbolizes divine authority in Crow's Fall poem. Um, sun symbolizes divine authority, truth, and natural flow. Transformation to black, consequences of pride.
moral and psychological lesson. So symbolism in this poem, in these poems, are ironic and moralistic, which highlights downfall. So while Hawk symbolizes control dominance, then Crow symbolized unchecked ambition or failure, showing Hughes' nuanced use of symbolism. Right now, fourth point is about imagery. Right. So एनालिसिस ऑफ इमेजरी. सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हॉक रोस्टिंग को. सो देयर आर विविड विजुअल इमेजरी लाइक माई आईज क्लोज्ड. आप ना दोनों जो पोएम्स है इसका टेक्स्ट अपने सामने रखिए ताकि आपको क्लियर हो पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ. क्योंकि यहाँ पे इमेजरी की बात हो रही है, तो हॉक रोस्टिंग पोएम में देयर आर विविड विजुअल इमेजरी like my eyes closed, inaction of falsifying dream. This line shows stillness, control, and awareness, and there's a physical imagery of claws, beak, and flight which conveys power, precision, and predatory instinct. So Hughes evokes sensory details of nature to depict dominance and natural order. In Crossfall, there is a hyperbolic imagery at his battle cry. Tree grew suddenly old, shadows flattened. So it exaggerates pride's effect on the environment. Visual imagery is there. Visual imagery of flight, blackened feathers of sun emphasizes action, ambition, and consequences. Auditory images there in the battle cry. Auditory image in battle cry enhances the intensity and drama of the scene. So Hughes imagery shows moral and psychological dimensions of ambition and ego, right? So अगर हमें ये दोनों पोएम्स की बात करें तो दोनों पोएम्स में बर्ड है. हॉक्स रोस्टिंग में जो बर्ड है वो हॉक है, और क्रॉसफॉल में जो क्रो है. अगर हम इन दोनों बर्ड्स की बात करें, हॉक एंड क्रो की, तो हॉक जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? हॉक सिंबलाइज कर रहा है पावर को, कंट्रोल को, डिवाइन अथॉरिटी को. और क्रो, ये सब आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ लिखना ये सब पॉसिबल नहीं है. और जो क्रॉ है वो क्या सिंबलाइज करता है? प्राइड को, एम्बिशन को और हिब्रिस को. राइट. टोन की अगर हम बात करें तो हॉक रोस्टिंग पोएम में जो टोन है वो काफ़ी काम है, कॉन्फिडेंट है और अथॉरिटेटिव है. बट ये जो दूसरी पोएम है क्रॉसफॉल, इसमें जो टोन है वो काफ़ी डार्क है, आयरॉनिक है और ड्रामेटिक है. राइट. अगर हम इन दोनों पोएम्स के मेटाफर की बात करें तो यहाँ पर हॉक जो है, बर्ड जो है हॉक, ये एज अ रूलर है, लाइफ अंडर कंट्रोल है इसके. ठीक है. लेकिन जो क्रॉ है वो बर्ड्स, जो उसमें ये बर्ड जो है क्रॉ, ये इमेजरी मेटाफर है ह्यूमन लाइक ईगो का, क्योंकि इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है. और इसका फॉल भी हो जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इसको देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक द बाइबल स्टोरी. क्योंकि इंसान में सेटन होता है जो, उसमें भी काफ़ी ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है, तो वो गॉड के अगेंस्ट लड़ता है. सिमिलरली क्रॉ में भी उसके अंदर भी प्राइड आ गया, ईगो आ गया है. वो सन से भी खुद को ज़्यादा ब्राइट समझता है, वाइट समझता है. तो ये भी उससे बेटर लड़ने जाता है और दोनों ही हार जाते हैं. सेटन भी हार जाता है और क्रो भी हार जाता है. और हारने के बाद इन दोनों को फॉल हो जाता है और उसके बाद दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं. क्रो जो है वो ब्लैक हो गया है, उसका वॉइस भी बहुत बेकार हो गया है. और जो सेटन होता है वो भी, उसका भी फॉल हो जाता है, उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, उसको भी हेल में जाना पड़ता है. सो दिस इज़ बेसिकली वेरी वेरी, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफर. अगर हम इमेजरी की बात करें तो हॉक्स रोस्टिंग में जो इमेजरी है वो विजुअल है, टेक्टाइल है. जैसे कि कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो विजुअल और टेक्टाइल है वो हॉक के क्लॉज से, उसकी बीक से, उसकी फ्लाइट से रिप्रेजेंट होता है.
और यहाँ पर क्रॉस फॉल में जो इमेजरी है वो विजुअल है, हाइपरबोलिक है, ऑडिटरी है, जैसे कि बैटल क्राई है उसमें, ब्लैक फेदर्स है उसमें। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैसेज की। तो दोनों ही पोएम एक अलग अलग सेपरेटली मैसेज देते हैं। हॉक रूस्टिंग मैसेज देता है कि नेचर्स पावर इज इनहेरेंट एंड ऑर्डरली, और क्रॉस फॉल मैसेज देता है कि एम्बिशन विदाउट ह्यूमिलिटी लीड्स टू डाउनफॉल। राइट। सो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. You need to mention Hughes and his poetic style and the use of animal figures in your answer. You need to organize content by devices. You need to discuss the metaphor. You need to discuss the metaphor, symbolism, and imagery one by one. And you need to provide examples for both poems with quotations. इसलिए अगर आपको lines याद हो जाती हो तो उन्हें याद कर लेना और फिर इसके अकॉर्डिंग उसको अपने आंसर में लिख लीजिएगा। जब आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, आप मेटाफर, सिंबलिज्म और इमेजरी को आप डिस्कस कर लेंगे, तो जैसे मैंने अभी कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए दोनों पोएम के, वो आपको ही बताने जैसे कि क्या क्या बताया था मैंने, और जो मैंने ओरली बताया था, सिंबलिज्म, टोन, मेटाफर्स, इमेजरी, मैसेजेस, ये सब आपको सब्जेक्टिव वे में लिखना होगा। ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करने के बाद यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर. यू कैन राइट uses birds to explore power, ambition and human nature, showing how control can be natural and destructive depending on ego. राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. Compare and contrast the portrayal of power in Hawk Roosting with portrayal of power in Crossfall. How does Hughes to use these animals figure to reflect on human nature and authority? So, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा इसमें. So, Ted Hughes often uses animals as symbolic figures to explore aspects of human nature, authority, and power. In hawk roosting and crossfall, birds are metaphors for different types of power. जैसे hawk जो है वो represent करता है, मतलब वो metaphor है controlled, natural, absolute power का, ये hawk है. और जो crow है वो ambitious है, ego driven है and flawed power है. So understanding these portrayals, which helps us to see how Hughes critiques human behavior through nature. Secondly, हमको बात करनी है पावर इन हॉक रूस्टिंग एंड द पोर्ट्रायल ऑफ पावर इन हॉक रूस्टिंग एंड द क्रॉस फॉल, इसकी बात करनी है. तो सबसे पहले बात करेंगे पावर इन हॉक रूस्टिंग. सो नेचर ऑफ पावर की बात यहाँ पर होगी. द हॉक एम्बडीज एब्सोल्यूट डोमिनेंस एंड अथॉरिटी. इट सिट्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, कॉन्फिडेंट इन इट्स सुप्रीमेसी ओवर लाइफ एंड डेथ. सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पावर की वो ये हैं कि वो काम है, डेलिबरेट है, कंट्रोल्ड है. पावर इज़ नेचुरल, इनहेरेंट एंड अनक्वेश्चनड. पोएम में एक लाइन है, आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट. So it shows pride without conflict or egoist struggle. So Hawk's power mirrors the natural or divine sense of authority in humans, where control is assured, competent and inherent, not forced. Third, आपको फिर से पावर की बात करनी है, portrayal of power in Crossfall. राइट. सो नेचर ऑफ पावर की हम बात करेंगे. क्रो अटेम्प्ट्स पावर थ्रू एम्बिशन एंड चैलेंज रादर देन नेचुरल अथॉरिटी. ही सीक्स टू डिफाई द सन, रिप्रेजेंटिंग डिवाइन और अल्टीमेट ट्रुथ. सो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पावर की कि ये ह्यूब्रिस ड्राइवन है, एग्रेसिव है, ईगोसेंट्रिक है. पावर इज अटेम्प्टेड एंड परफॉर्मेटिव, नॉट इनहेरेंट. जैसे इस पोएम में भी लाइन से, ही एम्ड हिज बीक डायरेक्ट एट द सन सेंटर. सो इट शोज डेलिब्रेट्स बट रिस्की exertion of authority.
So cross power mirrors human ambition and pride, showing how ego driven attempts at control can lead to downfall. So transformation to black symbolizes failure, consequence, and self delusion, right? So इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो, हाउ ह्यूज यूजेस एनिमल्स एंड फिगर्स टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर अथॉरिटी. तो यहाँ पर हॉक एज अ सिंबल की अगर हम बात करें तो हॉक रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, हायरार्की एंड नेचुरल अथॉरिटी. It reflects human with inherent power or leadership, confident yet morally aligned with natural order. लेकिन जब क्रो की बात करेंगे तो it represents ambition, ego, over reaching pride. It reflects human who try to exert power without wisdom or humility, leading to consequences. So um, Hughes Yes, Hughes contrasts natural authority with ego-driven ambition. So both poems explore the ethics of power, control, and human behavior, using birds and animals as a um, metaphor for different forms of authority. So आपको इस पूरे क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना है? You need to begin your answer with an introduction. In this section, you need to contextualize Hughes and his use of animals metaphor briefly. Later, you can discuss power in hawk roosting with quotes and examples linked to human authority. And उसके बाद फिर आपको पावर डिस्कस करना है क्रॉस फॉल में विद सेम कोट, एक्सप्लेनेशन एंड लिंक टू ह्यूमन ईगो इन hubris. उसके बाद you need to compare and contrast both the poems by using point wise format for clarity, and you can conclude your answer uh, by Hughes' overall commentary and on human nature and authority through through these two birds, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. Analyze how Ted अरे yes, it's Ted, right? So um, hmm. Analyze how Ted Hughes embodies Hawk to show sense of divine supremacy and natural power in the poem Hawk Roosting. So इसमें भी सबसे पहले बाकी आंसर्स की तरह ही आपको इंट्रोड्यूस करना है पोएम को और ऑथर को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पोएम की बात हो रही है तो हम दूसरी वाली पोएम की बात यहाँ नहीं करेंगे. तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो हॉक रूस्टिंग पर बेस्ड होगा. जैसे आप लिख सकते हैं हॉक रूस्टिंग विच इज़ पब्लिश्ड इन 1957 इज़ वन ऑफ टेड ह्यूज मोस्ट फेमस poems reflecting his fascination with nature, predatory instincts, and the psychological dimensions of power. The poem is written in first person perspective, giving the hawk a voice that asserts control, dominance, and authority. Hughes used the hawk as a symbol of natural power, divine, like supremacy, exploring how power functions in the natural world and human perception, right? Secondly, you need to use hawk as divine supremacy. So this is a first person perspective. The hawk narrates in I statements. जैसे ये सबसे पहली पोएम है ना, सबसे पहली लाइन है इस पोएम की. I sit in the top of the wood, my eye closed. So this creates a godlike omniscience, showing the hawk as all seeing, all knowing and in control. इसमें आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल की. लाइक एक लाइन है इस पोएम में, आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट और इन माई आई. तो दीज लाइन्स डेमोन्स्ट्रेट
absolute authority over life and death, right? So the hawk's power is unquestioned and inherent, similar to divine supremacy. It's born to rule, not to struggle for dominance, right? Third point, order in nature. So the hawk represents the natural hierarchy, a system where power is respected and aligned with the natural order. Unlike crow, the hawk does not challenge anything beyond itself. It exercises power responsibly and effectively. Fourth is hawk as a symbol of natural power. So there's a we can talk about physical power and predatory instincts. इस पोयम में एक लाइन है, my feet are locked upon the rough bark and my hooked head, hooked feet. So it shows strength, precision, and predatory excellence. Hughes uses vivid visual imagery to convey the hawk's control over its environment and prey, right? कामनेस और पेशेंस की बात भी हम यहाँ पर इस वाले में कर सकते हैं. Like hawk's power is not aggressive and chaotic. It is calm, deliberate, and measured. The act of roosting itself symbolizes quiet dominance and mastery, highlights authority through stillness, vigilance, and readiness. Right? Third point in this, integration of mind and body. So the hawk embodies perfect unity of instinct and consciousness. Every action is purposeful and efficient, reinforces the sense of natural supremacy and divine like order, right? So आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं. एक सेकेंड. So you can use these points to write an effective answer. You can start with context. In this, you need to mention Hughes' focus on nature, predatory instinct, and symbolism. You should discuss divine supremacy, which highlights Hawke's first-person perspectives and omniscience and absolute authority. You need to discuss natural power, which includes example of physical dominance, predatory skills, and calm authority. You can use quotations. In this, you can use the selective lines of the poem, which demonstrates control, hierarchy, and predatory instincts. And at the end, conclude your answer by emphasize how Hughes portrays the hawk as a perfect embodiment of nature's power and divine like supremacy, which contrasts it later with crow to show different aspects of ambition and ego. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Analyze the significance of crow's laughter in the poem. What does it reveal about crow's character and its understanding of its own action? So सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, so in Crow's Fall, Ted Hughes uses the crow as a symbol of figure representing human pride, ambition, and hubris. The crow is not just a bird; it embodies ego, defiance, and the consequences of over overreaching ambition. Laughter is a recurrent motive in the poem, providing insight into the crow's psychology, perception, and moral stance. Second point is significance of crow's laughter. So, expression of confidence and pride is there. There's a line, he laughed himself to the center of himself. So, the crow laughs as it prepares to attack the sun, symbolizing self confidence and and uh, and pride. It shows that the crow is aware of its power and boldness, even though it's challenging a force much greater than itself. Second is symbolism of ego and self absorption. The laughter actually represents the ego and self absorption. So, laughter indicates a crow's self centered joy, right? The phrase center of himself
which highlights egocentric thinking, where the crow is completely absorbed in its own ambition. Hughes uses this to critique human arrogance, showing how ego can distort one's perception of reality. Fourth is foreshadowing and dramatic irony. So, laughter also carries dramatic irony. The crow laughs before knowing the outcome, reflecting blind ambition and overconfidence. It foreshadows the inevitable failure. When the crow returns, when the crow Chad Black and confronting the sun. It reveals Crow's psychological complexity. The crow's laughter shows self awareness and exhilaration, yet it underestimates the consequences of its actions. Hughes represents a character that is proud, daring, and yet naive, highlighting the paradox of ambition and vulnerability. So, literary devices is highlighted here, like there's imagery. Laughed himself to the center of himself, ये जो line है, that visualizes ego and a physical center. Irony is there, the crow feels triumphant but the outcome is destructive. Symbolism is there, laughter symbolizes pride, joy and power, and the human tendency to overestimate one's control, right? सो ये सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करके यूज़ करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, राइट? In short, I can say that the crow's laughter embodies pride and egocentric ambition, self confidence and daring, psychological insight into overreaching and human hubris, foreshadowing of consequences, and irony. Hughes uses laughter as a literary tool to convey the complexity of ambition and the duality of power and vulnerability. So, by using these points, you can write a good answer to get good scores in your examination. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डिस्क्राइब द क्रोज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रोज एम्बिशन इन टेड. टेड है भाई ये भी. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन सब में यही सब कुछ है. मतलब जो मेन कंटेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो यही था. बाकी आंसर क्वेश्चंस पे भी, तो इसलिए सिर्फ 6 क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन वॉट वेज आर हॉक रूस्टिंग एंड क्रॉस फॉल डिफरेंट फ्रॉम द नेचर पोइट्री ऑफ द रोमांटिक्स. देखिए, रोमांटिक पोइट्री में भी यही होता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, नेचर को, बेसिकली बर्ड्स को सेंट्रल फिगर माना जाता है. और जो टेड ह्यूज की ये 2 पोएम्स हमने पढ़ी है, इसमें भी एनिमल्स को, बर्ड्स को ही सेंट्रल करेक्टर माना गया है. बट दिस पोइट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिसिज्म, रोमांटिक्स. तो यही हमें डिस्कस करना है. सो रोमांटिक, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपना आंसर में सबसे पहले. So, romantic poets like Wordsworth, Coleridge, Keats, and many more celebrated nature as sublime. You can write in your notes. The romantic poets celebrated nature as sublime, spiritual, and harmonious, often using it to reflect human emotions and transcendence. And Ted Hughes, in contrast, present nature as raw, violent, and morally complex, focusing on instinct, power, and survival. Hawk Roosting and Crowfoot, both the poems, exemplify Hughes' modern, realistic, and psychologically intense approach to nature, right? सो दूसरे पैराग्राफ में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं. डिफरेंसेस फ्रॉम रोमांटिक पोइट्री वर्सेस टेड्स पोइट्री. इट मीन्स यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि टेड की पोइट्री रोमांटिक पोइट्री से कितनी डिफरेंट है. सबसे पहली चीज़ इसमें आता है नेचर एज पावर versus nature as beauty,
राइट। सो रोमांटिक्स में नेचर जो है वो काफ़ी जेंटल होती है, रेस्टोरेटिव होती है, इंस्पायरिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल ले हम अगर वर्ड्स फर्स्ट टिंटन एबे, इट सेलिब्रेट्स पीस, राइट, it celebrates peace, reflection. Tintin Abbey celebrates peace, reflection, and spiritual growth. But in Hughes' poetry, Ted's poetry, the nature is predatory, violent, and morally neutral. Hawk roosting की अगर हम बात करें, so Hawk embodies absolute dominance and control. And Crossfall में जो पोएम है उसमें क्रॉस एम्बिशन कोलाइड्स विद द सन, शोइंग स्ट्रगल एंड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सेकेंड पॉइंट इसमें है फोकस ऑन इंस्टिंक्ट वर्सेस इमोशन। सो रोमांटिक पोइट्री जो होती है विद दैट एम्फसाइज ह्यूमन इमोशन, imagination and spiritual connection with nature. But Hughes' poetry emphasizes animal instinct and survival and psychological drive. So hawk and crow act out of innate power and ego, not sentiments, right? Third point is moral complexity versus idealism. So in romantics, nature is morally pure, symbolizing goodness and harmony. But in Hughes' poetry, nature is immoral. It is not moral and sometimes cruel as well. And it reflects human hubris and consequences. So cross blackening shows the cost of ambition, not a moralized ideal. The fourth point is language and imagery. So romantics use lyrical, flowing, and descriptive language to evoke beauty and motion, but Hughes' poetry uses direct, vivid, and often violent imagery, creating drama and intensity. Example for in um, Hawk's roosting, he clawed, fluffed, and fluffed his rage. I hold creation in my foot. So these are some example of precise, forceful, and immediate. Right. Fifth point is perspective on human nature. So in romantics, humans are harmoniously integrated with nature, reflective and spiritual. But in Hughes' poetry, nature mirrors human ego, ambition, and flaws. Like hawks idealize natural power and crow overreaching human ambition, right? So अगर हम इन दोनों पोएम्स का एक टेबल बनाकर मैं आपको कंपैरिजन बता सकती हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर. नेचर की अगर हम बात करें तो रोमांटिक पोइट्री का नेचर होता है ब्यूटीफुल, सबलाइन, हारमोनियस. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग. और ह्यूज पोइट्री का जो नेचर है वो है रॉ है, वायलेंट है ये, एंड मॉरली न्यूट्रल है, राइट. सेकेंड पॉइंट इज फोकस. फोकस की बात करें तो रोमांटिक पोइट्री जो फोकस करती है ह्यूमन इमोशंस पर करती है. आपने रोमांटिक पोइट्री भी पढ़ी होगी. तो ह्यूमन इमोशंस पर करती है और स्पिरिचुअलिटी पर करती है. ठीक है, मैं ठीक से बोल रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी में ठीक से लिख नहीं रही हूँ. सो सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग. ह्यूज पोइट्री फोकस करती है इंस्टिंक्ट पर, पावर पर और एम्बिशन पर, राइट. अगला है टोन. तो क्या बोलते हैं ये, रोमांटिक पोइट्री का टोन आइडियलिस्टिक होता है और रिफ्लेक्टिव होता है. इसका टोन मतलब ह्यूज पोइट्री का जो टोन है वो डायरेक्ट है, इंटेंस है और ड्रामेटिक है, राइट. इमेजरी की बात करें अगर
सो रोमांटिक पोइट्री की जो इमेजरी है वो लिरिकल होती है और डिस्क्रिप्टिव होती है, इसकी विविड होती है। ह्यूज की पोइट्री की प्रिसाइज एंड ऑफन वॉयलेंट भी होती है। अब लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं मॉरल एंड फिलोसफी की। तो यहाँ पर नेचर जो है, नेचर एज अ गाइड है और बेनिवलेंट है। और ह्यूज पोइट्री की बात करें तो नेचर एज वो इंडिफरेंट है, नेचर एज इंडिफरेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स ईगो एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो दिस इज़ द टेबल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं। सो आपको ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करके अच्छा एक आंसर लिखा जा सकता है। So start with the context, introduce romantic nature, poetry and Hughes' modern approach. You can discuss differences point-wise, like power versus beauty, instinct versus emotion, and moral complexity, language and human reflection. You can use textual evidences. उसके लिए आपको ये पोएम के टेक्स्ट की जो सिलेक्टिव लाइंस हैं उनको याद करना पड़ेगा, right? Or by using these points you can conclude your answer by emphasizing Hugh's contribution to modern nature poetry, psychological depth, realism and exploration of power and ego, right? तो यहाँ की क्लास यही, अब ये जो क्लास है ये यही ख़त्म होती है। आज हमारा टेड ह्यूज का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। इसमें हमने टेड ह्यूज की लाइफ, उनका मेजर वर्क और उनका लिटरेरी स्टाइल पढ़ा। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने दोनों पोएम्स का बैकग्राउंड पढ़ा, लाइन वाइज लाइन पोएम को डिस्कस किया, इसका डीप मीनिंग समझा। और इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो टुडेज सेशन ऑन टेड ह्यूज पोएम्स हॉक रूस्टिंग एंड Crossfall has been a deep dive into power of nature and complexities of ambition and psychological depth, right? So Hughes conveys through animal figure. We explored how the hawk embodies calm, controlled and divine-like power, reflecting natural supremacy and inherent authority. The crow represents audacious ambition, ego and human hubris, highlighting the consequences of overreaching. Hughes uses vivid imagery, symbolism, and metaphors to convey moral, psychological lessons and making his poetry intense, dramatic, thought-provoking. So these poems differs fundamentally from romantic nature poetry, focusing on instinct, realism, and moral complexity rather than idealized beauty. So I hope you have now a clear understanding of Hughes' thematic concern, literary techniques, and the way he reflects human uh, human nature through animal symbolism, right? So we have discussed answer writing strategies for previous year questions based on Ted Hughes poems Hawk Roosting and Crossfall. We explored how to analyze and take contextual lines from the poems, how to critical examine metaphors, symbolism and imagery, and techniques to compare and contrast themes like power, ambition, and human nature, and ways to structure answers effectively with textual evidence and key points. So this session was entirely focused on enhancing your answer writing skills. So you are now better equipped to tackle the questions confidently. In our next class, we will move to a new topic from your syllabus where we will explore fresh concepts and text. So remember to revise today's strategies and make notes of key points, um, and practice answering questions systematically. And like and share the video if you found this helpful, and subscribe to the channel for more updated lectures with all our English literature sessions. Thank you so much.